You are with the news here on Nation Now at 6 p.m. with us. I'm Seher Zama. Thanks for being with us. We're doing each of our own bit of working from home, staying indoors and respecting the guidelines of social distancing. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal now speaking. Let's take a listen in. प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन का ऐलान किया, ये सब लोग इसका अच्छे से पालन करें, घर से कोई बाहर ना निकले। जब तक बहुत ज़्यादा केवल सब्जी खरीदने के लिए, दूध खरीदने के लिए, केवल इस चीज़ के लिए अपने पड़ोस के अंदर जो भी दुकान है वहाँ तक अगर जाना हो तो जाएं, अदरवाइज घर से बाहर कोई ना निकले। अब एसेंशियल सर्विसेज को चलते रहने के लिए उनको हमने पास देने का अरेंजमेंट किया है। वो पास कैसे ले सकते हैं, सुबह मैंने इसके बारे में सारा तरकीब से बताया था, मैं एक बारी फिर से बता देता हूँ। जो सरकारी सेवाएं हैं, बिजली है, पानी है, इस तरह की जो सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के पास अपने अपने आइडेंटिटी कार्ड होंगे। सरकारी दफ्तरों में ऐसे लोग, जो कई ठेके पे काम करने वाले मजदूर हैं, कई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, जिनके पास सरकारी आईडी नहीं है, उनके बारे में मैं बताता हूँ अभी। तो जिनके पास सरकारी आईडी हैं वो अपना आईडी दिखाएंगे, रास्ते में कहीं भी अगर पुलिस मांगती है उनको अलाउ कर दिया जाएगा। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके पास अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के आईडी होंगे, वो भी चलेंगे। जो मीडिया वाले हैं उनके पास अपने मीडिया के आईडी होंगे, वो भी चलेंगे। जिन लोगों के पास अपने आईडी नहीं है, चाहे वो सरकारी विभाग में काम करते हों, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हों, चाहे वो दूसरे प्राइवेट, जैसे दूध देने का काम करता है, सब्जी बेचने का काम करता है, मंडी में सब्जी लाने का काम करता है, किसान है जो मंडी के अंदर सब्जी ले जाने का काम करता है, दवाइयों की दुकान वाला है, दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो 5 किस्म की मोटे मोटे तौर पे एसेंशियल सर्विसेज निकल के आती हैं। दूध, सब्जी, राशन की दुकान इन द सेंस जो किराने की दुकान अपने इलाके में होती है, किराने की दुकान, रोजमर्रा की ज़रूरतों की जैसे साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये, और दवाइयों का सामान। इन 5 चीज़ों से संबंधित दुकानें या ट्रांसपोर्ट करने का सारी व्यवस्था, या मैन्युफैक्चर करने की व्यवस्था, या उनको स्टोर करने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें एसेंशियल सर्विसेज में आएंगी। और ये सारी एसेंशियल सर्विसेज हम लोग चाहते हैं कि ये अच्छे से चलती रहें। तो इसके लिए इन सारे लोगों को पास की ज़रूरत है। जो लोग भी इन सारी एसेंशियल सर्विसेज के मैन्युफैक्चर में लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन में लगे हुए हैं, स्टोरेज में लगे हुए हैं, वेयर हाउसेज में लगे हुए हैं और दुकानों में लगे हुए हैं, उन सब लोगों के लिए हम पासेस देंगे। तो जिन के पास आईडी हैं वो आईडी इस्तेमाल करें, जिनके पास आईडी नहीं है उनको हम ई पास देने की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, नंबर है 1031। 1031 पे आप फोन करके, आपको बता दिया जाएगा, फोन करके बताएंगे कि आप क्या सर्विस देते हैं और आपको बता दिया जाएगा कि आपको ई पास कैसे मिलेगा। हम कोशिश करेंगे, मुझे पता है कि जैसे ही मैंने अभी ये नंबर अनाउंस किया, इस पर बहुत सारे कॉल आने लगेंगे। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको ई पास मुहैया कराने की, ताकि आप अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। मेरी आपसे विनती है, 1031 जनरल हेल्पलाइन नंबर नहीं है, इस पे जनरल फ़ोन कॉल मत करिएगा, नहीं तो ये नंबर, इतने फ़ोन कॉल अगर आने लगे तो ये नंबर ही जैम हो जाएगा। केवल वो एसेंशियल सर्विस वाले लोग जो एसेंशियल सर्विस दूध देने का काम करता है, सब्जी देने का काम करता है, किराने की दुकान का काम करता है, रोज़मर्रा की ज़रूरतों का, दवाइयों का, मास्क का, इन सब चीज़ों का जो काम करते हैं, केवल वही लोग अपना पास लेने के लिए इसके ऊपर फ़ोन करें, 1031 के ऊपर। बाकी लोग अभी फ़ोन ना करें, मेरी आप सब लोगों से विनती है, ताकि सबको जल्दी से जल्दी हम। दूसरा एक बहुत ज़रूरी है कि जो लोग, ये तो था एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वालों के लिए, जो आम जनता है, जिसे सामान खरीदना है, दूध खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, किराने का सामान खरीदना है, उन लोगों को पास की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आसपास अपनी कॉलोनी के अंदर जो भी किराने की दुकान है, अपने घर से उतर के किराने की दुकान तक जाने के लिए आपको किसी पास की ज़रूरत नहीं है, वो आपको अलाउ किया जाएगा। तो अगर आपको कोई भी छोटी मोटी चीज़ खरीदनी है, आप पैदल
अगर अपने घर से बाहर निकल के अपनी आसपास की दुकान पे जाके सब्जी खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, किराने की दुकान पे जाते हैं, दवाई खरीदते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा, आप पैदल अपने वहाँ पे जाके ये कर सकते हैं। एक कल मैंने पढ़ा था, जगह जगह सुनने में आया था कि कुछ डॉक्टर्स को और नर्सेज को कुछ इलाके के अंदर उनके मकान मालिक उनको घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। उनका मकान मालिकों का कहना है कि ये डॉक्टर्स और नर्सेज 24 घंटे कोरोना के मरीजों के बीच रहते हैं, तो इसलिए इनको कोरोना हो गया होगा, और अगर ये यहाँ रहेंगे तो मकान मालिक को भी कोरोना हो जाएगा, इसलिए उनको निकाल रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये गलत है। उन मकान मालिकों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कल को खुदा ना करे, भगवान ना करे, आपके घर में किसी को, आपके बच्चे को कोरोना हो गया, तो डॉक्टर और नर्स ही काम आएंगे और कोई नहीं काम आएगा। तो इसीलिए ये ऐसा मत कीजिए। ये डॉक्टर और नर्स हमारे लिए भगवान का काम कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी बचा रहे हैं। आप सभी मकान मालिकों से निवेदन है कि हमें इनको सलाम करना चाहिए, इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, सारे देश को शुक्रिया अदा करना चाहिए। इन लोगों का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ये लोग इन्फेक्ट हुए तो हम लोग इनकी सेवा करेंगे, हम लोग इनको ठीक करेंगे। और अगर कोई मकान मालिक फिर भी नहीं माना तो हमने ऑर्डर्स कर दिए हैं, दिल्ली सरकार ने ऑर्डर्स कर दिए हैं, दिल्ली पुलिस इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमने कई जगह पे गरीबों के खाने की व्यवस्था की है। वैसे तो हम राशन के ज़रिए हर 72 लाख लोगों को, हर व्यक्ति को 7.5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं। हम 8.5 लाख परिवारों को 5-5 हज़ार पेंशन दे रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके दायरे से फिर भी बाहर रह जाएंगे। ऐसे होंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोग होंगे जिनको पेंशन नहीं मिलेगी, ऐसे लोग होंगे जिनको बिल्कुल खाने की भुखमरी के कगार पे हैं। हम नहीं चाहते कि एक तरफ कोरोना से तो बच जाएं और भुखमरी का शिकार हो जाएं। तो हम लोगों ने कई जगह दिल्ली के अंदर उनके लिए लंच और डिनर का इंतज़ाम किया हुआ है, उनको हम खाना खिलाते हैं। लेकिन अब लोगों की संख्या बढ़ रही है जो खाना खाने वालों की, तो आप चिंता मत कीजिए, मैंने ऑर्डर दे दिए हैं और ऐसे स्थानों की संख्या बढ़ाई जा रही है पूरी दिल्ली के अंदर। अब कई स्थानों के ऊपर हम खाने का इंतजाम करेंगे। वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का मुझे बताया गया कि अच्छे से पालन किया जा रहा है। लाइनों में जो लोग खड़े होकर खाना ले रहे हैं, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम फॉलो कर रहे हैं और इनकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन सरकार जितना मर्जी कुछ कर ले, सरकार तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक समाज और देश साथ नहीं देता। मेरी आप सब लोगों से फिर से विनती है, ये बहुत पुण्य का काम है, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने अपने इलाके की जिम्मेदारी लीजिए। आप जिम्मेदारी लीजिए कि मैं अपनी कॉलोनी के अंदर, पड़ोस की झुग्गी बस्ती के अंदर, पड़ोस की कच्ची कॉलोनी के अंदर मैं इस इलाके की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, यहाँ किसी को भूखे नहीं सोने दूंगा। और आप इंश्योर कीजिए कि सब लोगों को खाना मिले। जिन जिन लोगों को भगवान ने ज़िंदगी में कुछ दिया है, वो सब लोग ये जिम्मेदारी लें कि भगवान ने हमें दूसरों के काम आने के लिए सब कुछ दिया है। ये पुण्य का काम है और यही सच्ची देशभक्ति है। जय हिंद। Big announcements here that have come in by the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal here. First and foremost, of course, those who are in belonging to the part of the essential services sector here, finding it difficult to move about, being on the road. There have been instances of the police attacking them. For that, Arvind Kejriwal has said that they have sorted this out with the Delhi police. You can call in the number 1031 to get your pass. If you don't have one, if you have an ID card, if you belong to the essential services, this is of course pertaining to basic requirements of food, vegetables, medicines, being a doctor, being a journalist, use your ID card, that will suffice. But another interesting point here being made that if you can also move about if you're out to buy your essentials, the police will not stop you. Not sure how that is going to work on ground because
This is not something that the police has considered so far. He's made other announcements here as well. Most importantly, concerns as far as free ration. 72 lakh people free ration, 5,000 rupees pension to 8.5 lakhs for the poor. These are for the poor who've lost their livelihood, their daily wage owners. They have nowhere to go. He's, of course, provided home shelters for them already, and now has been providing ration as well. I don't want anyone to go to sleep on an empty stomach. These are big announcements for the poorest of the poor now being made by the Delhi Chief Minister. In other news, this is an unfortunate case coming in of the police being on duty and ensuring that guidelines of the lockdown are being respected, but people on the road in some cases are losing it already. Remember, we are still on day 1 of the lockdown. Keep your patience, keep your calm is of prime importance. But in this shameful example of this report here that's come in from Kolkata, this is a video that has emerged of a lady attacking and abusing a police officer because her car was stopped. In these visuals, you can see how the lady was heckling the officer, arguing with him, and questioning why her car is being stopped in this manner. She was out trying to get medicine when her car was stopped. We're going to be getting in further inputs here from our correspondent in just a bit, but this is an incident here that has happened, taken place in the Salt Lake area there in Kolkata. As you can see, the lady there losing her cool. Remember, for all our viewers watching, the police at the end of the day are doing their job. If you're showing your ID or if you're giving a valid enough reason to be stepping out, the police would be listening in. The police, of course, also need to be made to understand as far as keeping in mind in us availing our basic essentials there are concerned, that needs to be taken into account as well. But this is day 1 of the 21 days, 3 weeks lockdown that has been announced. We still need to get the hang of it. We still need to understand the importance of staying home. If you're not staying home, there will be action taken against you. Remember, the government has made it very clear. The central government given an instruction to respective state governments. They're saying that if anyone found violating the guidelines of this lockdown, you will invite action against you, and that action can be as strong as 1 year imprisonment. This is how seriously the lockdown needs to be taken. This is the only way that you can flatten the curve. This is the only way that you can break the circuit of the spread of coronavirus. Coronavirus from across the world has proven. India has the benefit of observing from how other countries have suffered, and the only way to stop this, remember, there is no treatment, there is no vaccine available, and the only way to stop any further spread of the coronavirus is to stay put, stay home, and participate in this lockdown. Let's get in those inputs. We're getting in correspondent Tamal Saha with these details here. Tamal, in what we've seen here, the lady, of course, has tried to say that she was out taking medicines, and yet this is not something that the police had accepted. Well, Sahar, no reasoning can ever justify the abominable action that she has displayed, the behavior she has displayed. The incident happened at Salt Lake. This lady is from Picnic Garden area, and she had traveled all the way to Salt Lake, which is roughly about 4 to 5 kilometers away. She is claiming that she was looking for a medicine. But because there is complete lockdown, there are several nakas at several places, and police was only doing their job. Police people were there, deployed, to in a way check each and every vehicle so that people do not come out and people have the fear of stepping out because it's a complete lockdown. When the lady was stopped, she started abusing the officers to an extent, heckled them, and eventually what you saw was shocking. She tried licking the officer in order to pass on the virus because she wanted to suggest if she has been stopped because of coronavirus, then she might as well transfer the virus by passing on some body fluids onto the officer. So yes, it is absolutely disgraceful. It is absolutely disgusting. And what
what she has done. She was immediately taken to Bidhannagar North Police Station because the officer on whom this assault happened, he belonged to Bidhannagar North Police Station. He is a sub-inspector. The lady has been arrested and she has been booked under several sections. The idea is if you are doing anything wrong, then you would be punished. Yes, that's true. And to what extent you can be punished is, of course, 1 year imprisonment. And if you're attacking a police officer, you would be charged under that as well. This is something that people need to understand in keeping their calm and patience. This is a 21 period, and we need to wait it out. We need to respect the rules of the lockdown. Tamal, many thanks for getting us those details. Let's get you inputs now. Moving from Kolkata and now to Bengaluru, we have with us our correspondent Neha Hebale with these inputs. Neha is there at Cubbon Park area in Bengaluru. Neha, what can you get us? Is the lockdown being observed in there? Well, Seher, in Bengaluru, the Cubbon Park is a very iconic location where you'd see evening joggers and, people coming out at this time of the day. But today, as you can see, it wears a deserted look. But having said that, you still have a set of, people who have actually come out despite the police urging people, despite the government urging people not to come out. You have, a handful of joggers who've actually come out today to the park, to go ahead and exercise. Now, the bigger question that we need to be asking over here, Seher, is this really an essential? Can this not be, pushed off for a couple of days? Can this not be put off for a couple of days? This is something that, of course, will be taken very strictly by the cops. We'll have to wait and see. They have, in fact, sealed off all the entry points to the Cubbon Park as well. But despite that, you're seeing people coming out and, of course, jogging in the evening. This is one thing. As far as the rest of the city is concerned, Seher, we saw that at least about 90% of the vehicles stayed off the road. But even for those 10%, the police were very strictly enforcing and checking each and every vehicle, for, of course, the documentation or why exactly, or if the drivers being able to establish that it was an emergency, which is why they were on the road. All right, so this is, of course, still under strict police vigil here. Neha, many thanks for getting us those details. Remember, lockdown needs to be taken up as a citizen's responsibility here. And this is now, for day one at least, happening under strict policing. We're hoping that each one of us get the message and observe this lockdown voluntarily instead of the police here instructing us with a danda on the road to be back home, to not be stepping out. In many of these restrictions now that have been announced, some of the state governments have also put in stern restrictions, is the view that's coming in from people. This is for the state of Uttarakhand, where restricted purchase of essentials is only between 7 a.m. to 10 a.m. We'll get those inputs in just a bit, but also getting in further details here as far as our correspondent Neha with those inputs. This is on yet another case of Bengaluru cops that have been beaten as well. Neha, it seems the tension of this lockdown that seems to be getting the better of each of us, and we're already only at day one. We've seen instances of cops attacking people belonging to the essential services sector, but Bengaluru cops beaten up as well just for doing their job. Well, that's right, Seher. It's unfortunate. You would expect better sense to prevail among the people. We are all responsible citizens of this country. The least we can do is abide by the rules. But here in Bengaluru, you're seeing how these bikers have, blatantly, one, flouted the rules. Secondly, they were overspeeding. Third, they've breached that checkpost. And fourth, they were even indulging in wheelies, which even otherwise is banned across Bengaluru. Now, not just this, when the police actually tried to detain them, tried to secure them, they've gone and further beaten up the cops as well. This is not behavior that you should expect at a time like this, when the entire country is under lockdown, when the police are constantly on their toes trying to ensure the better good of people. You have citizens, irresponsible, careless citizens like this, who are causing havoc. Now that this has come to light, a case has been registered is what we are picking up, and also 2 people have been detained. We'll have to wait and see, of course, what happens going forward, and requesting everybody to stay indoors, stay patient. It is just
21 days. There are alternatives to do that can be figured out at home by staying indoors, but we'll really have to wait and see what comes out and how the 21 days actually progress in Karnataka. Right. Neha, we've of course observed this from our team of correspondents in other states here as well, where many people don't understand the ramifications of violating the rules of the lockdown. There can be very stern action that can be taken well within the law against you. How many people that you've spoken today or managed to speak to today on the street, of course, maintaining that that distance of social distancing that needs to be maintained, of people understanding how serious this is? Well, Seher, in fact, you did see some evening joggers that were here. Apart from them, we've also been speaking to people from the morning from various walks of life who've been outside. While some of them genuinely, yes, had emergencies or had come out to buy essentials, there were many others that were merely seen coming out in the roads, to possibly catch some fresh air or, possibly just to take a stroll. Now, this can be put off. This is something that the people have to understand. The responsibility lies with them. You have enforcement by the police, you have restrictions put in place by the government. But having said that, we'll have to wait and see as to how the people now, take this upon themselves to keep the virus curtailed. So we're again urging people to stay home, stay safe, stay healthy. Let's do this for the better good of the society. All right. Well, Neha, many thanks, Neha, for getting us those inputs here. We're going to continue getting you, our viewers, a pan-India view of the scenario on the first day of the lockdown, how important it is. Be a responsible citizen, stay indoors. Stay on with us, back in just a bit. Thanks for staying on with us. You are with The Nation now. I'm Seher Zama. We are continuing to getting you nationwide updates here, what's happening across the country on the first day of the lockdown. Crucial to stay at home, and we're respecting the guidelines of the lockdown as much. Each one of us in our team at Mirror Now, we've decided to get you these shows from home, setting up our mini studios in our living room and anchoring from home to get you the latest here. In what has been announced as the lockdown, there are certain restrictions, of course, that have been put in place. But essentials that will be available to us. Remember, time and again, in multiple assurances that have come in from the central government and each of the respective state governments here as well, on markets being open and providing essentials. But there are certain states that have restricted on these essentials here as well, such as Uttarakhand or Mumbai here, making sure that the essentials would be available only for a limited period of time. Let's in fact get you details coming in from Kodagu with respect to the lockdown here in what is being followed. Remember, this is in the state of Karnataka. Hundreds of people who were seen flocking the markets to buy essentials. Remember, this has caused panic in the Kodagu district in Karnataka with these restrictions that were imposed for the purchase of essential items. The markets that were kept open only for a limited period of 2 hours. Look at the jam and the rush that this has caused, images of which that are coming in on your screen. When Mirror Now confronted the district collector here, he defended this move, saying that these restrictions on essentials have worked in their favor. This comes in at a time when the state of Karnataka is currently struggling to establish primary contacts of people who have tested positive for coronavirus in the state. Our correspondent Neha has been getting us all of these details with further inputs now. Neha, this is avoidable. If you're keeping such a tiny window of time open for purchase of essentials, this is going to be causing a panic every day. That's absolutely right, Seher. And, instead of course, acknowledging the fact that this will not work, you have the DC of Kodagu who's, even gone on to say that this was what was working for the past 2 days. And we were under the assumption that today, too, it would work. But clearly, if you see the visuals, there are at least a good 100 vehicles there, if nothing else. And you have a lot of people coming out of these vehicles onto the streets, flooding the streets, panic buying, all of what we've been advising people not to do. So understandably so, if
if you're keeping the window, like you said, of just 2 hours from 12 p.m. to 2 p.m. for people to buy essentials, even after the Prime Minister, the Chief Minister have multiple times stressed that all essentials will be available, people need not worry. The district administrations themselves over here taking a call is definitely causing a lot of panic. We can only urge the government to, do better than this, Seher. Neha, does this mean the preparedness in this nationwide lockdown that was announced by Prime Minister 8 p.m. 4 hours time that was given in, that a lot of state governments here were not prepared, and the question to be asked is why not? Because this is something that we were eventually headed to. There were other state governments which had put in a lockdown of 2 weeks. Now it's a nationwide lockdown of 3 weeks altogether, and this is a level of preparedness that the Karnataka government should have had in place. That's absolutely right, Seher. It's one thing to say that you will ensure Section 144 and you will ensure that people do not crowd. You will also ensure that essential supplies will be given to the people. But when you're putting them on the spot here and only telling them that essential grocery shops will only be open for 2 hours, you do not expect them to sit at home. You understandably so, they will head down to the streets, they will crowd the markets, and they will come rushing for the essentials. Because remember, we've seen this in other places as well. And now in Karnataka also, we'll have to wait and see as to what the district administration now does, and whether alternate arrangements are going to be made, and whether the shops are going to be allowed to stay open longer in order to ensure the crowding doesn't happen. All right. Neha, many thanks for getting us those inputs. We're now going straight across. This is part of a daily briefing. The Union Health Ministry here with the Health Secretary with the daily figures and the numbers here. They're giving us this briefing yet again. Let's take a listen in. ये किया था कि हम इस इन्फेक्शियस डिजीज का चेन ऑफ ट्रांसमिशन इसको ब्रेक कर पाएं, इसको तोड़ पाएं, और इसके लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उनको यूनिफॉर्मली और बड़े इफेक्टिवली फॉलो करने पर ही वो संभव हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने पूरे देश के सभी लोगों से अपील भी की थी कि हमें सबका कोऑपरेशन चाहिए कि हम इस इन्फेक्शियस डिजीज पर किसी तरह से अपनी जीत हासिल कर पाएं। उनके दिए हुए इस अपील और इन आदेशों के तहत ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इससे तहत सारी मिनिस्ट्रीज, सारे डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आदेश भी जारी किए हैं। उन आदेशों के अनुसार किस किस एरिया में क्या क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो कि हमारे होम सेक्रेटरी साहब के चेयरमैनशिप में, उन्होंने भी डिटेल आदेश जारी किए हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसको जो भी आदेश जारी हुए उनका ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन कोऑर्डिनेट कर रही है, मॉनिटर कर रही है। इसके तहत जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस हैं उनको क्लोज करने का आदेश दिया गया है। कुछ एक्सेप्शंस की गई हैं, जो है कि मिनिमम जो भी एक्सेप्शन है ये भी मिनिमम स्टाफ के साथ ऑपरेट करें, और उन एक्सेप्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें डिफेंस, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेज, ट्रेजरी, पब्लिक यूटिलिटीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, पावर जनरेशन, पोस्ट ऑफिसेज, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और अर्ली वार्निंग एजेंसीज को एग्जम्पशन दी गई है। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेज में भी सब ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज करते हुए लेकिन कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं, जैसे कि पुलिस, सिविल डिफेंस, इमरजेंसी सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्रिजन्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेजरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन, म्यूनिसिपल बॉडीज, और जो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं उनको एग्जम्पशन दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जितनी भी इसेंशियल सर्विसेज हैं वो सब भी इस समय पर अवेलेबल रहेंगी, खुली रहेंगी, जिसमें कि हमारे हॉस्पिटल, मेडिकल शॉप्स, हमारी फैक्ट्रीज जो कि दवाइयाँ बनाती हैं, वैक्सीन्स बनाती हैं, सैनिटाइजर्स, मास्क या कोई भी मेडिकल डिवाइसेस बनाती हैं, वो सारी फैक्ट्री अभी खुली रहेंगी। साथ ही स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से कहा गया है कि जो भी ई कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको और प्रमोट किया जाए, कि जिसके तहत कि इसेंशियल जो गुड्स हैं हमारे, जैसे कि फूड, मेडिकल इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल, वो सब ई कॉमर्स के थ्रू एट होम डिलीवरी हम प्रोवाइड करा सकें और मिनिमम मूवमेंट ऑफ पीपल जो हम इंश्योर कर सकें। इसमें ये भी कहा गया था कि
जो भी इन कंटेनमेंट मेजर्स को पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर सेक्शन 51 से 60 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आज ही इस संदर्भ में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के लेवल पर भी एक डिटेल मीटिंग हुई थी। सारे माननीय मंत्रियों ने इसके ऊपर कोविड-19 की प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर समीक्षा करते हुए ये कहा है कि जितने भी आदेश जारी किए गए हैं उनको पूर्णतः अमल किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग एज ए पॉलिसी मेजर, क्योंकि हमें इस बीमारी का ट्रांसमिशन रोकना है, उसके तहत जो भी कार्रवाई की जाए उसके ऊपर हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में 100% पूर्णतः अमल हो, उसके लिए उन्होंने आदेश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कई लोगों को, जिनको जो विदेशों से आए हैं पिछले कुछ दिनों में और वो लोग होम क्वारंटाइन सजेस्ट किए गए हैं, तो सब लोगों को बचाने के लिए जरूरी है कि वो जो होम क्वारंटाइन की गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करें। और ऐसे में अगर हमें पाया गया कि अगर वो उन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हमारे कुछ मित्रों ने इससे पहले भी कहा था कि कुछ लोग होम क्वारंटाइन की गाइडलाइन देते हुए भी इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो इन्फेक्शियस डिजीज का रिस्क बढ़ाते हैं, तो उसके लिए भी उनके ऊपर अंडर द एक्ट कठिन से कठिन चर्या की जाएगी। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है। साथ ही आपको सबको विदित है कि इससे पहले भी हम लोगों ने अपना मेडिकल टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ाते रहे हैं। अब तक हमारी 118 सरकारी लैब्स हैं जहां पर कि हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और इसके तहत हम आज देश में करीब 12,000 सैंपल्स प्रतिदिन करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही एडिक्वेट ज्योग्राफिकल अवेलेबिलिटी के लिए हमने प्राइवेट लैब्स को, जो कि एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब्स हैं, उनको भी हमने कवर किया है। अब तक 29 लैब चेन्स को इसकी परमिशन दी जा चुकी है और उन लैब चेन के अंडर में अभी अप्रॉक्सीमेटली 16,000 कलेक्शन सेंटर्स हैं, तो जिसके द्वारा भी जो हम कलेक्शन कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। यहाँ यह मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जो भी ये लैब्स हैं, इनको आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस हैं और जो सैंपल कलेक्शंस के जो नॉर्म्स हैं कि किस किस आदमी का सैंपल कलेक्ट होना चाहिए, किस किस आदमी की टेस्टिंग होनी चाहिए, ये सारे नॉर्म्स इन लैब्स को फॉलो करने हैं। साथ ही इससे पहले भी आपको बताया गया है कि एक दवाई जो है हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन, वह दवाई हमने 2 पर्टिकुलर केसेस के लिए ही अलाउ की है, जो कि प्रोफाइलैक्सिस के रूप में काम करेगी, जो केवल दी जा सकती है हेल्थ केयर वर्कर जो कि सस्पेक्टेड या कंफर्म केसेस से डील कर रहे हैं या उन कंफर्म केसेस में जिनमें कि जो उनके फर्स्ट कांटेक्ट है उनको दी जा सकती है। यहाँ मैं फिर से आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जो ये परमिशन दी गई है, प्लीज इसको इन लोगों के अलावा इस दवाई को कोई ना लें। ये डायरेक्शन बड़ी टेक्निकली डिफाइंड डायरेक्शंस हैं, इसका पूर्णतः अमल हो। धन्यवाद। गृह मंत्रालय की तरफ से। गृह मंत्रालय की तरफ से मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूंगी कि भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रही है कि एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाईज और मूवमेंट में कोई भी बाधा नहीं आए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत भारत सरकार ने डिटेल्ड गाइडलाइंस निकाली हैं और राज्य सरकारों को एडवाइजरीज भी जारी की हैं जो ये स्पष्ट करती हैं कि एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज सुचारू रूप से चले, किसी भी नागरिक को समस्या ना आए। गृह मंत्रालय एक कंट्रोल रूम द्वारा यह सिचुएशन को निरंतर मॉनिटर कर रही है। कंट्रोल रूम सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स के सुपरविजन में चल रहा है। इसमें जो संबंधित मंत्रालय हैं जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, उसके भी सीनियर अधिकारी कार्यरत हैं। हम शिपिंग और रेलवेज के साथ भी कांटेक्ट में हैं। इसके अलावा स्टेट्स एंड यूटीज ने भी सीनियर अधिकारियों को नोडल ऑफिसर बनाया है जिनके साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जिससे कि फील्ड लेवल में जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं, उनका निदान कर सकें। गृह मंत्रालय ने ये भी सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि वो हेल्पलाइंस इस्टेब्लिश करें, हेल्पलाइन सेटअप करें, जिससे कि नागरिकों को और सप्लायर्स की जो भी असुविधाएं हैं वो फील्ड लेवल पर त्वरित गति से हल हो जाए। और लगभग सभी स्टेट्स ने आज शाम तक ये हेल्पलाइंस चालू कर दी हैं।
इसी श्रृंखला में आज होम सेक्रेटरी ने डीपीआईटी सेक्रेटरी और फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी के साथ मिलकर ई कॉमर्स की जितनी एजेंसीज हैं और जो अन्य रिटेलर्स हैं उनके साथ एक बैठक की। बैठक में सभी संस्थाओं की समस्याओं का फीडबैक लिया। उनको ये बात बताई गई कि मिनिमम ह्यूमन कांटेक्ट के प्रिंसिपल का अनुपालन होना चाहिए और केवल एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज में ही व्यापार होना चाहिए। सभी संस्थाओं को आश्वासन दिलाया गया कि उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उचित समाधान निकाले जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इन सब कदमों के साथ और सबके सहयोग के साथ हम इंश्योर कर सकेंगे कि जो भी आवश्यक गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको स्ट्रीमलाइन तरीके से आप तक हम पहुंचा सकें। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है हमारे पास। Essential services are not being allowed to operate in several parts of the country. Supply chains are disrupted. What is being done to address this? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, होम मिनिस्ट्री ने अपना कंट्रोल रूम सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स के साथ सेटअप किया है। जो भी हमारे पास समस्याएं आ रही हैं, वी आर टॉकिंग टू द कंसर्न स्टेट्स एंड यूटीज, उनके नोडल ऑफिसर्स के साथ बात कर रहे हैं और उसका सल्यूशन निकाल रहे हैं। तो मेरा अनुमान है कि कल तक स्थिति में जो भी चैलेंजेस हमने फेस की हैं या सप्लायर्स ने फेस किए, उनका निदान हो जाएगा। 33 नितेंद्र डीडी न्यूज से। सर, ये जो दवा है एंटी मलेरिया, कई लोग खरीद करके रख लिए हैं, तो क्या दवा दुकानदारों को भी ये बताएंगे कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो कैसे बेच रहे हैं? इस पर भी कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, जो हमारी ये दवा है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये अभी एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है और केवल एज ए इमरजेंसी यूज़ के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों के लिए प्रेस्क्राइब की गई है। ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये सिचुएशन है जिसमें कि हम लोगों में एक सेंस ऑफ डर, एक भय जो है, उसके चक्कर में लोग इसको दवा को अगर खरीद भी रहे हैं या इसको सोचें इसको लें, तो मैं उन सब से आपके द्वारा अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसा ना करें। ये सारी दवाएं होती हैं, इन सब के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हम टेक्निकल लेवल पर इसको एनालाइज करके ही प्रेस्क्राइब कर सकते हैं और हमने जिसको प्रेस्क्राइब किया है, इनके अलावा कोई भी इन दवाओं का इस्तेमाल ना करें। इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ऐसा करने से उनको नुकसान हो सकता है। 1515 Hello, sir. Ayushman from Mirana. What is the status of PPs on the state level, sir? We have seen several reports coming from states on PPs. There is not ample number is available in the private government hospitals. So as far as PPs and masks are concerned, as I have already been briefing every time, see these PPs and masks, most of these PPs and masks, they also have some imported component. And all of us are aware that there had been disruption with respect to import of certain components which are required for PPs and masks. However, Government of India has actually been aware of this situation from the time when the cases started happening in other parts of the world. And just to highlight, when it came to masks, we prohibited their exports as early as 31st of January. Similarly, for the PPs also 31st of January, their export was prohibited in the country. We have also started analyzing the technical guidelines which are related with respect to what type of PPs can be put to use based on the type of virus we are dealing with. Subsequent to that, we have started analyzing the suppliers available within the country. We are taking their support in terms of we are hand-holding them to ensure that we can get production through these indigenous buyers also. And as part of that exercise, as yesterday I briefed all of you, that we have even contacted our research agencies like DRDO and BEL, and we are taking support of all such agencies also to see that we have sufficient availability across the country. We have also ensured a system in place where a public sector unit is hand-holding all the states in terms of procurement also. I can assure you that there is a problem associated because most of these components were imported, but Government of India is aware of the situation and is trying its best to ensure that sufficient stocks of N95 masks and PPEs are made available. एक और ऑनलाइन क्वेश्चन है। In many COVID-affected countries, tests are being done free of cost. Can't the same be done in India also?
So I am assuring you that as far as testing is concerned, in all the government labs, they are all done free of cost. However, we also are aware that there was a request from the countrymen, from the community particularly, that let the wider availability of tests be made available. It is in this context we have allowed private sector, and even let me also bring it to your notice, even private sector came forward, and after due discussion, a price also capping was also done for the prices, so as to ensure that even when private sector is providing services to community, they are not providing at an exorbitant or at a rate in whatever way they want to do it. So this has also been ensured. 35. हेलो सर, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। आज चुनाव आयोग ने एक फैसला लिया है कि अमिट स्याही जो होती है, जो चुनाव मतदान के दौरान इस्तेमाल होती है, वो स्वतः तौर पे स्वास्थ्य मंत्रालय को बता चुके हैं कि अगर क्वारंटाइन लोगों पे निशान लगाने के लिए इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं। क्या इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ सोचा है? और दूसरी चीज़, covid19.org करके एक वेबसाइट है, covid19india.org, ये आधिकारिक वेबसाइट है? ये हम जानना चाहते हैं। इसमें सभी राज्यों के आंकड़े वगैरह हैं। देखिए, covid19.in